Yes, dear students, in today's class we will discuss the second element of new economic policy. So far as its first element is concerned, that is liberalization, that we have discussed in the earlier classes. Now its second element is privatization. Now first of all, what is meaning of privatization? Privatization is the general process of involving the private sector in the ownership and operation of a state-owned enterprise. It implies gradual redundancy of government ownership or management of the public sector enterprises. So it may happen in two ways. Now, first, outright sale of government enterprises to private enterprises. यानी जब गवर्नमेंट अपने जो है एंटरप्राइजेस को बेच दे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. Now second, withdrawal of the government ownership and management from the mixed enterprises. यानी कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जिनमें गवर्नमेंट की भी शेयर होते हैं और प्राइवेट के भी शेयर होते हैं. गवर्नमेंट अपने शेयर मैनेजमेंट से बाहर निकालती है, तो उस एंटरप्राइज की जो है मैनेजमेंट वो प्राइवेट हैंड्स में देते हैं. दिस इज़ आल्सो प्राइवेटाइजेशन. Now these are two ways how the privatization happens. Now the question is that why we felt need for privatization. So we will discuss now need for privatization. Due to poor performance of PSUs, there was a call for privatization. क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं इनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है एम्प्लॉइज़ में, क्योंकि जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं. ये वजह है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अक्सर पुअर परफॉर्मेंस होती है. सो ड्यू टू दिस पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, देयर वाज ए कॉल फॉर प्राइवेटाइजेशन. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 clearly and categorically stated the significance of PSUs in the process of growth and development. It was due to public sector undertakings that Indian economy underwent a structural transformation. But to improve production and managerial efficiency, as well as to facilitate modernization, privatization was taken as a remedial measure. But mounting losses of PSUs became unsustainable. Leakage, privilege, inefficiency, and corruption had become rampant in PSUs.